हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं। व्हाट आर द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन एंड हाउ कैन वी फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। So first of all, what is quadratic equation? The general form is ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0. It means अगर आपका a 0 होगा तो हमारी x की टर्म 0 हो जाएगी, देन इट बिकम लीनियर इक्वेशन. So condition for this is a is not equal to 0, where a, b, c all belong to real number. तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास आई, ये आई कहाँ से? आपने 9th में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म होती थी जब हमारा x की पावर 2 होती थी. इफ px इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो px इज इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जब आपने पढ़ा था तो उसके अंदर हमारे पास जीरोज होते थे. अगर जो भी जीरोज हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं and in quadratic equation if px is equal to 0 then it becomes roots of the quadratic equation. So we have two roots of the quadratic equation. That means we have two value of x for which this equation satisfies. So roots, so how can we find the roots? रूट फाइंड करने के 3 मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन और मिडल टर्म स्प्लिटिंग, जो कि आप पहले 9th में पढ़ चुके हैं. एंड सेकेंड मेथड इज बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. एंड थर्ड मेथड इज बाय completing the scale. अब हम रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो रूट्स होते क्या हैं, उनकी नेचर क्या होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स पता करने के बाद हम 1 by 1 तीनों मेथड करेंगे. फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग द स्क्वायर. तो जो हमारी जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड डिस्क्रिमिनेंट. That is represented by capital D, and this is equal to b square minus 4ac. If the value of D is equal to 0, then we have real and equal roots. And if D is greater than 0, then we have real and distinct root. Distinct मतलब दो equal roots but real. और अगर आपका d less than 0 हो गया then no real roots.
वन बाय वन अब हम इसको रूट्स निकालना शुरू करते हैं तीनों मेथड से, और आपको नेचर ऑफ रूट्स के बताएंगे कि इस इक्वेशन में कैसे नेचर निकलती है। तो हम एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं और तीनों मेथड से उसको सॉल्व करते हैं। 2x square minus 5x plus 3 equal to 0. So first of all, we will use method of factorization. फैक्टराइजेशन और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इस मेथड के अंदर ये आपका a है 2 एंड b इज -5 एंड c इज 3। तो 2 इंटू 3 को जो 2 और 3 का जो प्रोडक्ट है दैट मीन a और c का जो प्रोडक्ट है दैट इज 6। अब हमने 6 को इस तरह से ब्रेक करना है कि इसका मल्टीपल और -5 का सम दोनों इक्वल हो। दैट मीन अगर हम 6 को ब्रेक करते हैं टू फैक्टर्स दैट इज 2 and 3, so by making sum of 2 and 3 the term becomes 5 and by multiplying it becomes equal to a and c. So by splitting the middle term, two factors are -2x and -3x. तो first 2x कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से, तो दिस इज x -1, तो 3 कॉमन, दिस इज x -1। तो ये जो हमारे दो फैक्टर बन गए, तो वन फैक्टर इज दिस and another is this. By solving this we get, so we get two roots of the quadratic equation, that is 1 and 3/2. This is our first method, factorization method. Then second method, quadratic formula. Question is same. So using quadratic formula, first of all we find d, that is discriminant, which is equal to b square minus 4ac. b is -5 4ac. So this is 25 minus 24, that is 1. तो वैल्यू ऑफ d इज 1। अब जो d की वैल्यू है ये हमारी ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन वी हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो इससे हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बता सकते हैं और देन फर्दर इसको यूज करके हम रूट्स में निकाल सकते हैं। अब जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है दैट इज x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट d बाई 2a, then b is -5, d is √1 and so this is, तो आपके दो रूट्स बन जाएंगे 5 + 1/4 and 5 - 1/4, that is 6/4 and 4/4 on cutting and 1. So roots of the equation is 3/2 and which is same as we have found in the factorization method. And let me start the third method, that is completing the scale. Let me start with the third method, that is completing the square. So in this method we have 2 or 3 steps. First, सबसे पहले हम जो हमारी constant term है उसको दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे। सेकंड स्टेप के अंदर हमें एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हटाना है, दैट मीन वी कैन डिवाइड बोथ साइड बाय 2। तो दोनों को साइड को 2 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग है दिस इज दिस। तो हमने इस साइड का
स्केयर बनाना है, देन उस साइड को स्केयर को कंप्लीट करना है, देन दोनों साइड को कंपेयरिंग करनी है। तो फॉर मेकिंग द कंप्लीटिंग द स्केयर वी हैव x, put x here, then minus, then take the half of the coefficient of the x. If we have coefficient 5/2, it half is 5/4, then it is whole square। और ये जो आपकी टर्म आ गई -5/4, इसको हमने दूसरी साइड में प्लस करना है। अब ये टर्म आपकी चाहे माइनस में है, अगर माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो भी आपको उधर प्लस करना है, इधर माइनस है तो भी आपको उधर प्लस करना है। तो दिस इज then we take LCM। तो दिस इज 1/4 स्क्वायर। ये दोनों साइड के हमारे स्क्वायर कंप्लीट हो गए। तो our solutions are, एक बार हम इसको प्लस लेंगे और सेकंड टाइम we can take it as minus। So on solving we get 3/2, and on solving this we get 1। So our roots are 3/2 and 1। So you can use any of the three methods, but result remains same, that is the finding the roots of the equation by the three methods। तो आज का जो वीडियो है हमारा इसी बेस पे था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हम तीनों मेथड से कैसे फाइंड कर सकते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन वी विल फाइंड द सॉल्यूशन इन डिटेल इन आवर सेकंड वीडियो। अगर आपको ये वीडियो और मेरे द्वारा बताए गए स्टेप्स सही लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लेके प्रेजेंट हों। धन्यवाद।